सो वेलकम बैक। अपना आईबीसी का सेशन चल रहा है और हम लोग लास्ट टाइम क्वेश्चन 72 तक पहुंचे थे, बराबर। अब आते हैं 73। ये है ओसी का पार्ट, दैट इज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के इस पार्ट में क्या क्या चीजें समझते हैं और क्या क्या चीजें जानते हैं, ठीक है। लेट्स सी। लास्ट टाइम मैक्वायर केस तक किया था, उसके आगे का पार्ट बता रहा हूँ। So the question now we can frame is कि ओसी के बारे में अगर डिस्प्यूट्स हुए तो उसका एडमिशंस कैसे और क्या। लेट्स सी। एक सिनेरियो ऐसे बनता है कि विल ऑपरेशनल क्रेडिटर application be admitted if following disputes are outstanding. ओके सो अगर कुछ डिस्प्यूट्स आउटस्टैंडिंग है तो क्या ओसी का एप्लीकेशन एडमिट होगा। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी सिचुएशन क्या है। लेट्स टेक द फर्स्ट वन। अ कंज्यूमर कोर्ट dispute is pending and the claimant, okay, a consumer court dispute is pending and the claimant in the consumer case has filed OC application against corporate debtor, OC application against corporate debtor arising from same cause of action. Okay, arising from same cause of action. ठीक है। सो ये एक तरह का हमने ले लिया सिचुएशन कि कंज्यूमर कोर्ट डिस्प्यूट बनने की। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और सिचुएशन लेते हैं। लेट्स फ्रेम फ्यू सिचुएशंस देन वी विल डिस्कस। ठीक है, सो लेट्स से अ लेबर डिस्प्यूट, okay, labor dispute is pending for back wages and employees, okay, and employees have filed OC application. Okay, a labor dispute is pending for the back wages and employees have filed OC application for same relief as claimed in labor court. Okay, as claimed in labor court. Okay, so very good one. Labor dispute pending है, same relief के लिए OC application. Wow, good one. We will discuss that. Third one, income tax assessment of corporate debtor is pending. Income tax assessment of corporate debtor is pending. Okay, so will that be considered dispute or not? वो भी angle देखते हैं. And let's take fourth one. The OC application was filed wherein
corporate debtor has contended that goods were returned, okay, that goods was returned and credit invoice was raised duly, and credit invoice was raised duly. Okay, and the fifth one you can say, let's say a mediation proceeding, a mediation proceedings, okay, of check bouncing is pending. So mediation proceeding of check bouncing is pending, let's say against company and its director. Against company and its directors. ठीक है, चलो तो हमने कुछ और 5 सिचुएशंस ली हैं, उसके हिसाब से we will analyze things. ठीक है, we will analyze things. So in situations में how do we analyze things, what things has to be covered, क्या क्या चीजें हैं, let's try and understand. So पहला सिचुएशन ये था कि कंज्यूमर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, और याद रखना हम एनालाइज कर क्या रहे हैं. Will the operational creditors application be admitted if the following disputes are pending? मतलब लीगली क्या पता होना चाहिए अपने को? लीगली ओसी एप्लीकेशन में अगर पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, ओसी एप्लीकेशन में अगर पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, दैट इज किसी और कोर्ट में या कहीं और कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो ये एप्लीकेशन नॉट एडमिटेड होगी. सो उसी एप्लीकेशंस में अगर पेंडिंग डिस्प्यूट्स है तो ये एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगी. प्रॉपर. अब एक सवाल उठता है कि अगर एक कंज्यूमर डिस्प्यूट इज पेंडिंग and the claimant in the consumer dispute has filed a OC application against corporate debtor. So consumer dispute भी pending है और वो claimant जो है वो OC application file कर रहा है against the same cause of action. Will that be considered as a pending dispute by NCLT? Okay, चलो. As कभी-कभी students को समझने में time भी लगता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा इलैबोरेट करता हूं. कोशिश करते हैं तो थोड़ा आपको बेस लेवल समझ में आएगा. लेट्स से एक मोटर कार डीलर है, ठीक है. तो देयर इज अ मोटर कार डीलर एंड ये मोटर कार डीलर ने किसी कंज्यूमर को गुड्स बेचते हैं, तो उन्होंने एक कंपनी है ओला कैब्स, उनको कार्स भेजी है. The company name is Ola Cabs. Ola Cabs Private Limited. So motor car dealer ने Ola Cabs वालों को कार बेची है. They have sold cars. ठीक है. लेकिन बाद में पता चला कि ये कार्स डिफेक्टिव है. They are found to be defective. ठीक है. Later. So they have been found to be defective later. So Ola Cabs ने क्या किया? Ola Cabs ने फाइल किया है कंज्यूमर केस. ठीक है. So the situation is that now Ola Cab has filed a consumer case. ठीक है. और कंज्यूमर केस का अभी तक आउटकम नहीं आया है. The Ola Cab says we have bought a car और goods are defective. तो defective goods कंज्यूमर केस में आएगा, ऐसे बोलते हुए केस फाइल किया, और अभी तक वो गुड्स के ऊपर का या कोई कंक्लूजन नहीं आया है. ओला कैब्स ने इस मोटर कार डीलर कंपनी के खिलाफ नाउ एनसीएलटी भी चले गए. They went to NCLT also and they have filed a OC application.
ओसी एप्लीकेशन। आपको ये पूछ रहे कि क्या ये ओसी एप्लीकेशन एडमिट हो सकता है? व्हाट डू यू से? क्या ये ओसी एप्लीकेशन एडमिट हो सकता है? क्या लगता है? ओके सो क्या मैं बोलूं अगर ये पेंडिंग डिस्प्यूट है तो ओसी एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगा? अच्छा, इज दिस ओसी एप्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन? Is this OC application arising from the same cause of action? Same case, same motor car, same thing. There is nothing new as such. Clear? So, NCLT ऐसे सिचुएशन में क्या डिसीजन लेगी? थिंकिंग वाला पार्ट था, ठीक है। अगर इसका आंसर होता तो इसका आंसर NCLT का डिसीजन कुछ ऐसा होता। हमने जो पढ़ा है लॉ उसी के हिसाब से डिसीजन कुछ ऐसा होगा कि अ पेंडिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट और कंज्यूमर केस, अ पेंडिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट और कंज्यूमर केस। सो पेंडिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट और अ कंज्यूमर केस बिफोर ट्रिब्यूनल और कोर्ट, before tribunal or court. So before any tribunal or court is held to be a dispute pending, is held to be a dispute pending, okay, is held to be a dispute pending, and thus OC application not admissible. ओके सो ये एक तरह से डिस्प्यूट पेंडिंग है और उसी एप्लीकेशन इसलिए एडमिट नहीं होगी बिकॉज अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है तो एनसीएलटी बोलता है वो डिस्प्यूट का जजमेंट आने दो तब डिसीजन होगा। यही पॉइंट था। क्लियर? मैं आपको यही पॉइंट समझाने कर रहा हूं कि अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है जो एनसीएलटी की नजर में उस पूरे इंसिडेंट का डिसीजन अराइव करेगा, तो जब तक उस डिस्प्यूट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं होगा। क्लियर? समझा? ओके फाइन। अब हम लोग दूसरा इंस्टेंस देखते हैं। दूसरा इंस्टेंस ये था, अ लेबर डिस्प्यूट is pending for back wages and employees have filed OC application for the same relief. Okay? अब देखो कई बार कई इंडस्ट्रीज है ना सीजनल होती है। इसका मतलब जब सीजन वन लग रहा है और उसके बाद सीजन 2 आएगा तो इन दोनों के बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है। इस टाइम गैप की वजह से लेबर जो यहां पे काम कर रहे हैं, ओके, उन लोगों को हम लोग कुछ टाइम के लिए मे बी महीना, 1.5 महीना, कभी कभी 3-3 महीने तक छुट्टी देते हैं और फिर नेक्स्ट सीजन आएगा तब यहाँ पे मेरे को लेबर चाहिए वापस, तो 3 महीने तक के लिए भी छुट्टी हो सकती है। अब ये लेबर हमें छोड़ के परमानेंटली चले ना जाए, इसीलिए लेबर को एक मोटिवेशन के हिसाब से एक अमाउंट दिया जाता है। ओके, दैट इज आप हमारे साथ जुड़े रहो, ये अमाउंट दिया जाता है। ये अमाउंट क्या करते हैं, जब सीजन 1 है, सीजन 1 और सीजन 2 है, इसके बीच में यहां पे जो लेबर्स थे मेरे पास, वो अगर सीजन 2 में वापस आएंगे तो मैं उनको ये 3 महीने की बैक वेजेस देने के लिए रेडी हो जाता हूं कि अगर आप सीजन 1 के लेबर हो एंड इफ यू कम बैक टू मी इन सीजन 2 ऑल्सो, तो मैं आपको 3 महीने की बैक वेजेस, तो ये एक तरह का अट्रैक्शन होता है लेबर को वापस जाने के लिए। ठीक है? सो जो लेबर वापस गए उन्होंने बैक वेजेस मांगे एंड एम्प्लॉइज हैव फाइल्ड अ ओसी एप्लीकेशन कि सर हमें बैक वेजेस नहीं। पहली बात बताओ, ये ओसी एप्लीकेशन हो भी सकता है क्या? इज दिस अ ओसी एप्लीकेशन? ये ओसी एप्लीकेशन हो भी सकता है क्या? दैट्स द रिलेवेंट क्वेश्चन। ओके, व्हाट डू यू थिंक?
Can this be an OC application at the first place? Yes, Lena says it's a provision of services. It's a provision of services. And employee related services are very well covered in the OC application, sir. Okay, clear? Now, my question is, ये जो back wages मैं दे रहा हूं, ये जो back wages देने की बात उठी है, is this wages for services or is this wages for retention of employee? Is this wages for services or is this wages for retention of employee? Tell me. Okay. Okay. इसका मतलब मेरे जो सीजन 1 के एम्प्लॉय थे, उनको सीजन 1 के लेबर के लिए तो मैंने पैसा दे दिया, अब उनको बोला 3 महीने के बाद वापस सीजन 2 में आना। अगर आप सीजन 2 में आओगे तो मैं आपको बैक वेजेस दूंगा। तो मैं जो बैक वेजेस दे रहा हूं, एम आई पेइंग फॉर सर्विसेज और विल आई बी पेइंग फॉर रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, कि वो लोग मेरे पास वापस आए? आप कुछ समझ में आया? सो इफ दिस इज फॉर रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट मीन्स इट इज नॉट फॉर सर्विसेज। That means it is not for services. और एक पॉइंट समझो, any amount which is paid not for services is not dash. Any amount paid not for services is not dash. Is not operational debt. Is not a debt or an operational debt. You're correct now. Exactly. It's not a debt or an operational debt. So अगर ये operational debt ही नहीं है, तो फिर in that case, okay, OC application वहीं पे reject हो जाएगा। ठीक है? So it is an interesting angle to discuss कि OC application reject क्यों हो रहा है? Because ये operational debt के amount नहीं है। So the demand for back wages, demand for back wages is not an operational debt. Okay, it's not an operational debt, and such wages are not paid against any services provided by such workmen to company. Okay, hence OC application is not admitted. Okay, the OC application hence is not admitted. ठीक है? Clear? Fine. सबको clear? Very good. Let us see this one. What about this? Income tax assessment is pending for corporate. क्या ये pending disputes है? Is this pending dispute or not? What do you think? Apply your mind, apply your thinking, apply your knowledge. What do you think? Income tax assessment of corporate debtor is pending. Is this a pending dispute? Think. Okay. Now, इसके पीछे लॉजिक क्या है? Let's understand. If you read this carefully, income tax assessment is pending. Income tax demand notice is not pending. ये pending नहीं है, assessment. Assessment का मतलब होता है चीजों को चेक करना. So this is not at all a dispute. तो pending dispute तो दूर की बात है. It's not even a dispute to be considered. Okay.
It's not even a dispute to be considered. Pending dispute is a far-fetched thinking that we could have thought. So here, income tax assessment is not a dispute. Income tax assessment is not a dispute since no demand has been raised. Since no demand has been raised against corporate debtor. Okay, so income tax assessment is not a pending dispute, and since no demand has been raised against the corporate debtor, so it's not even a, you can say, a kind of dispute that can call for demand. Okay, so there's no question of OC application or anything coming out of this. Okay, and what do you think about this one? The OC application was filed wherein corporate debtor contended that the goods were returned and credit invoice was raised. Is this a dispute? Is this a dispute, do you think? The OC application was filed and the corporate debtor contends, I have already returned the goods. Okay? Yes. Yes, Lina is correct. It's a dispute. Yes, it's a dispute. So sales return or a purchase return as the terms go. It can be a sales return or a purchase return. So a sales return or a purchase return with proper documents if proved, with proper documents if proved. So with proper documents if proved, then OC application, okay, is not admissible, as it is pending dispute. As it is pending dispute. Okay, so yes, sales return or purchase return agar hai, so that is a pending dispute and application will not be admitted. Clear? Hope आपको थोड़ा थोड़ा idea अब आने लग गया कि pending dispute होता क्या है. And the last one says that a mediation proceedings of the check bouncing is pending against the company and its director. Okay, so मीडिएशन मतलब एक तरह का सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग था. कंपनी और डायरेक्टर चेक बाउंसिंग केस का सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स कर रहे थे और जिसके साथ वो सेटल कर रहे थे वो इस बात से भड़क गया क्योंकि कंपनी सेटलमेंट के लिए कुछ इंटरेस्टेड दिख नहीं रही थी. एज ऑफ कंपनी टेकन फॉर ग्रांटेड चल रही थी. सो इन दैट केस ही फाइल्स एन ओसी एप्लीकेशन. इज दिस अ पेंडिंग डिस्प्यूट बाय द वे? A mediation proceeding of a check bouncing is pending against the company and its director. Is this pending dispute? Okay. No, Aditya say no. हाँ बोलो. बिल्कुल. It is like this, शिका, कि तुम्हारा चेक किसी कंपनी से आया था पेमेंट के तौर पे और तुमने एक चेक बाउंसिंग केस किया क्योंकि उस चेक डिसऑनर हो गया. क्लियर? जब तुम चेक बाउंसिंग केस कोर्ट में करती हो तो उस टाइम पे कोर्ट ने बोला वुड यू लाइक टू सेटल द मैटर. आपने बोला सर इट्स अ वेलकम स्टेप, लेट्स डू इट. तो कोर्ट ने तुम्हें और उस कंपनी पर्सन को भेज दिया है मेडिएशन में. मेडिएशन में जाने के बाद वो आदमी सेटल करने से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है. तो तुम चेक बाउंसिंग का केस तो रखा हुआ है, अब तुम ओसी एप्लीकेशन मूव कर रही हो क्योंकि चेक 1 करोड़ के ऊपर का है.
In that case, should I consider your check bouncing case as a pending dispute? Think. Should I consider the check bouncing case as a pending dispute? Anyone can think. Yes, sir. Okay. Now, a very interesting angle came into picture from NCLT. What is pending in the court? What is pending in the court? Mediation or a check bouncing case? What is pending in the court? Mediation or a check bouncing case? Check bouncing case. Okay. यहाँ पे क्या लिखा है? What is pending in the court? So if the mediation is pending, it is a settlement thing, then in that case, and if the other party is not trying to settle, but yet mediation is pending, तो जब तक mediation pending है तब तक आपका that is pending, इसको pending dispute नहीं बोला जा सकता. हाँ, अगर check bouncing case pending होता उस टाइम पे तो ये बोल सकते थे. तो जब तक मेडिएशन वाला उसको क्लियर करके वापस नहीं भेजता तब तक तो ये पेंडिंग डिस्प्यूट नहीं है. तो ये बात एक हाँ होता. अभी मैं चलो आर्बिट्रेशन का भी एंगल तुम्हें समझाता हूं वापस से. तो यहां पे mere pendency of mediation proceedings on dishonor of payment, okay, on dishonor of payment of check cannot be considered as pre-existing dispute. ओके. सो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स अपने आप में डिस्प्यूट नहीं हो सकते बिकॉज वो सेटलमेंट की तरफ चल रहे. हाँ, अगर वो सेटलमेंट की जगह पे चेक बाउंसिंग लिखा होता तो आई वुड हैव कंसीडर्ड दैट. बोलो. एग्जैक्टली लेकिन एनसीएलटी ने बोला सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके बीच में डिस्प्यूट नहीं पेंडिंग है, रादर आपके बीच में सेटलमेंट पेंडिंग है. समझा डिफरेंस? दैट इज तुम इस केस को खत्म करने के उसमें आए हुए हो. ओके. डिस्प्यूट पेंडिंग में जीत और हार की बात होती है, ना कि हम लोग चीजें सेटल करते हैं. पॉइंट नोटेड. अभी तुमने आर्बिट्रेशन के बारे में पूछा ही है तो ठीक है, चलो एक आर्बिट्रेशन का एंगल भी दिखाता हूं. Question 74. Let's see. Arbitration भी interesting angle आता है. So let's take it this way, that what is the effect? What is the effect on OC application if let's say A, there is arbitration clause stated in agreement to refer dispute to arbitration. So if the arbitration clause is stated in the agreement that we will refer the dispute to arbitration, so what is the effect? Or you can say B,
arbitration proceedings pending before arbitral tribunal for same cause of action. For same cause of action. Okay? So arbitral proceeding is pending before the tribunal for the same cause of action. एक वो, एक refer, and let's say C. If arbitration award is passed, let's see. If arbitration award is passed. So if the arbitration award is passed, but no appeal, is filed or admitted till OC application. ओके सो एक जगह पे आर्बिट्रेशन अवार्ड तो पास हो गया है बट कोई अपील फाइल नहीं हुई है, एडमिट नहीं हुई है. ओके दैट वे. और लेट्स से डी, arbitration appeal against award pending in High Court. So arbitration appeal against an award is pending in High Court. Okay. So arbitration के कुछ situations लिए, 4 situations है. एक तो पार्टीज आपस में डिस्प्यूट कर रही है पर उनके बीच में आर्बिट्रेशन था, तो क्या एनसीएलटी के पास ये केस जा सकता है? थिंक अबाउट इट. देयर इज अ आर्बिट्रेशन क्लॉज, ओके, stated in the arbitration agreement to refer the dispute to arbitration. So if we have that arbitration clause, okay, can we go to NCLT then? And if you go to NCLT, don't you think there is a provision in arbitration, that section 8, that judicial authority has to refer the matter back to arbitration if the defendant moves an application? See, application will be moved only after the notice is given, right? So once the notice is given by a party to the corporate debtor moves an application then. So he says that there is an arbitration between us. So will the NCLT refer the matter back to arbitration, or will NCLT listen to the matter? Got it? अब dispute आपको समझ में आया क्या है? That's where the conflict of law is coming into picture. कि एक प्रोविजन बोलता है कि एप्लीकेशन अगर अपनी जगह पे सही है, कंप्लीट है, तो CIRP स्टार्ट हो जाएगी. That is the IBC which is saying. On the other hand, arbitration is saying that if there is a arbitration clause, the matter should be referred to arbitration and no other proceedings civil court should entertain the matter. Got it? See, invoke नहीं किया है वो हम बोल रहे हैं. See, point is this way, अगर invoke नहीं किया है तो कोई भी corporate debtor खुशी खुशी ये थोड़ी ना admit करेगा कि let there be CIRP. Have a sense ना. वो अगर तेरी कंपनी है, सामने कोई तेरे ऊपर केस कर रहा है, तो will you not invoke an arbitration rather than in CIRP? Arbitration is better than CIRP, right? In all terms. Clear?
ऐसा सिचुएशन, ऐसा वाला क्वेश्चन ना एक सिचुएशन में आया भी था। चलो मैं तुमको वो समझाता हूं। द सिचुएशन ए एक केस में आया था। ये केस था सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज का। सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज वर्सेस chemical additives. Chemical additives. Yes. Okay. 2021 NCLT उसका जजमेंट था। ओके इस जजमेंट के हिसाब से क्या हुआ था, एनसीएलटी ने यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल ने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया था। उन्होंने कहा एनसीएलटी held that availability of alternate remedy, that availability of alternate remedy, that availability of alternate remedy, okay, of arbitration does not bar triggering of CIRP application, does not bar the triggering of CIRP application. Okay, by OC. Why? As insolvency proceedings has overriding effect. As insolvency proceedings has overriding effect. So as insolvency proceeding has overriding effect as per section 238 of IBC. As per section 238 of IBC. ओके सो उन्होंने इस केस में क्लियरली बोला था कि इसके ओवरराइडिंग इफेक्ट की वजह से जस्ट बिकॉज यू हैव एन आर्बिट्रेशन क्लॉज बट दैट डज नॉट बाइंड एनसीएलटी एंड आईबीसी स्टैंड्स ऑन अ सेपरेट फुटिंग। सिमिलर जजमेंट एक और चीज में आया था also the case was SBI versus that was Sucam Power Systems वाला केस। ये थोड़ा पुराना है, सिस्टम्स वाला केस 2018 में डिसीजन लिया था एनसीएलटी और उनके सामने सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पुट अप आया था। ओके और एनसीएलटी के जज ने बोला था कि जो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 89 ऑफ आर्बिट्रेशन दैट इज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में है, ओके सेक्शन 8 में, वो आईबीसी के सेक्शन 9 या सेक्शन 7 को एप्लीकेबल नहीं हो सकते। ओके सो उन्होंने क्लियरली बोला था कि द restrictions in arbitration proceedings okay apply under section 8 and 9 of IBC 8 and 9 of IBC but not under section 7 of IBC. Okay
सो ये बात क्लियरली बोला था कि अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज आप लेना चाहो तो एट द मैक्स आप ओसी एप्लीकेशन के लिए ले सकते हो बट नॉट एफसी के लिए. दैट इज वेयर फाइनेंशियल क्रेडिटर makes application. ओके. हाँ, इस पॉइंट के बाद अभी इस टाइम के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर नया कोई लॉ नहीं आया है. सो अगर लॉ के हिसाब से फिर कोई चेंजेस आएंगे तो इसको नोट वर्दी होगा. लेकिन अभी तक का ग्राउंड एकदम क्लियर है कि जस्ट बिकॉज यू हैव एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग दैट डज नॉट मीन सीआईआरपी कैन नॉट बिगिन. ओके. हाँ, अगर बात कुछ और होती तो अलग होता. हम्म. सी आर्बिट्रेशन का जो ग्राउंड है वो आप सिर्फ ओसी एप्लीकेशन में रेस कर सकते हो. एफसी के अंदर तो देयर इज नो क्वेश्चन बिकॉज एफसी में हम कभी डिस्प्यूट्स देखते ही नहीं है. एफसी में तो सिर्फ डिफॉल्ट देखते हैं. ओसी में डिस्प्यूट एज वेल एज डिफॉल्ट दोनों देखा जाता है. क्लियर? समझा? एग्जैक्टली. आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर आपके पास है या चल रहा है तो उसके अंदर वो ओसी एप्लीकेशन में देखेंगे. सेक्शन 7 एप्लीकेशन में उसका कोई इंप्लीकेशन ही नहीं है. तो एनसीएलटी बोलता है केस एडमिट हो सकता है. हाँ, तो केस एडमिट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इज दैट क्लियर? चलो अभी दूसरे सिचुएशन का आंसर बताओ कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इस समय पेंडिंग है बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर सेम कॉज ऑफ एक्शन. क्या अब सीआईआरपी एडमिट हो सकता है? नहीं, अब पॉइंट ये है कि एफसीओसी नहीं, जो पर्सन एप्लीकेशन कर रहा है वही मेरे आर्बिट्रेशन में भी है. ओके. तो क्या अब ये एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है चाहे एफसी एप्लीकेशन हो चाहे ओसी एप्लीकेशन हो? चलो ओसी एप्लीकेशन है, क्या बोलते हो? हम्म. देखो, सो एक कंपनी का गुड्स एंड सर्विसेज का केस हुआ था अपनी कंपनी के साथ. अपनी कंपनी ने आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया. अब सामने वाली कंपनी सीआईआरपी फाइल करने की बात कर रही है और आर्बिट्रेशन इस समय पेंडिंग चल रहा है. ट्रिब्यूनल बन चुका है, केस चालू हो चुका है. ओके. सो ऐसे केस में एनसीएलटी क्या करेगा? वो कभी भी ये केस एडमिट नहीं करेगा क्योंकि डिस्प्यूट पेंडिंग है. ओके. और वही आदित्य पूछ रहा था कि डिस्प्यूट पेंडिंग है तो क्या होगा सर? आर्बिट्रेशन पेंडिंग है तो क्या होगा? ये होगा कि इफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स are pending before tribunal, before arbitral tribunal, okay, then CIRP application shall be dismissed. So अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो सीआईआरपी एप्लीकेशन इस केस में डिसमिस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसमें तो केस पेंडिंग है और पेंडिंग डिस्प्यूट्स में एनसीएलटी एडमिट नहीं करता. हाँ, उसी का एडमिट नहीं करेगा. उसी के डिस्प्यूट से उसी में देखते हैं ना. एग्जैक्टली. क्लियर? एंड
अब बताओ, आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो चुका है और अभी कोई अपील भी पेंडिंग नहीं है, क्या अब ओसी के खिलाफ एप्लीकेशन जा सकती है? आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया है तो केस खत्म हो गया, अपील भी पेंडिंग नहीं है, तो क्या अब एप्लीकेशन जा सकती है? ओके, एग्जैक्टली। तो ऐसा है कि ओसी हार गया है, सॉरी, इसमें अपना ओसी जीत गया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड ही वांट्स टू फाइल अ सीआईआरपी ना। व्हाट से? बराबर समझा? तो अपने को क्या देखने का, अपने को ये देखने का है कि जब एप्लीकेशन किया था कब कोई डिस्प्यूट पेंडिंग था कि नहीं। ओके, सो अगर कॉर्पोरेट डेटर केस हार चुका है और इस केस में ओसी एग्जीक्यूशन करने के बजाय सीआईआरपी के लिए जाना चाहता है तो चलेगा, प्रोवाइडेड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ना हो। ओके, और कोई इश्यू ना हो इस रिस्पेक्ट में। तो यहां पर इफ आर्बिट्रेशन award has been passed, then no dispute is pending. Then no dispute is pending. And if appeal is filed, and if appeal is filed under section 34 of Arbitration Act, okay, and such appeal, but such appeal is not yet admitted, okay, or the appeal was dismissed, or the appeal was dismissed, okay, or execution proceedings was dismissed, proceedings were dismissed, okay, then CIRP can be admitted. Okay, then CIRP can be admitted. समझा? तो जब जाके CIRP एडमिट हो जाएगा, दैट इज अगर कोई अवार्ड के खिलाफ कॉर्पोरेट डेटर गया था कोर्ट में, उसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। तो इन दैट केस अगर कॉर्पोरेट डेटर वहां पे भी हार गया है तो फिर सीआईआरपी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ हो सकती है। अब बचा फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल क्या बोलता है कि चलो अब इमेजिन करो कि आर्बिट्रेशन की अपील एडमिट हो गई थी और हाई कोर्ट में अभी वो पेंडिंग है, तो क्या अब आपका सीआईआरपी एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है? इंटरेस्टिंग, मतलब ऑलमोस्ट लाइक सारे एंगल्स आपसे डिस्कस किए हैं। सो इस केस में अगर अपील पेंडिंग है, इस केस में अगर अपील पेंडिंग है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से एनसीएलटी और एलएटी ने दोनों ने बोला है कि एक तरह से अपील का मतलब डिस्प्यूट अभी भी पेंडिंग है। सो इफ एन अपील इज फाइल्ड, ओके, किसने फाइल की है? कॉर्पोरेट डेटर ने।
तो is filed and admitted under section 34 of Arbitration Act. ओके सो अगर अपील फाइल हुई है और सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर अपील इस समय पेंडिंग दिख रही है, ओके, अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट द proceedings of such is continuation of adjudication. ठीक है, proceedings. ठीक है, सो अगर आपकी अपील कुछ पेंडिंग है तो इन दैट केस ये जो प्रोसीडिंग्स है अपील में, वो होता क्या है, वो आपके सूट का ही कंटिन्यूएशन है। और जिस टाइम पे अगर वो आपके सूट का ही कंटिन्यूएशन है तो अपील में डिसीजंस बदल भी सकते हैं। लोअर कोर्ट में कॉर्पोरेट डेटर हार गया, अपील में जीत भी सकता है, और जीत गया तो फिर डिक्री का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। दैट मेक सेंस। इन दैट केस अगर अपील पेंडिंग है तो CIRP एप्लीकेशन एडमिट नहीं हो सकती। सो हेंस CIRP एप्लीकेशन is not maintainable. Okay, hence CIRP application is not maintainable. क्लियर, समझा सबको? सो इस पूरे सारे क्वेश्चन से एक चीज क्लियर हुई, यार आई वुड से एक से ज्यादा चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या एनालिटिकल पॉइंट्स क्लियर हुए? लेट्स सी द एनालिसिस। लेट्स सी द एनालिसिस। अगर किसी केस में डिस्प्यूट इज पेंडिंग बिफोर एप्लीकेशन, dispute is pending before application. So अगर किसी केस में dispute is pending before application, तो क्या ध्यान रखना? ये ध्यान रखना कि CIRP जो रहेगा that cannot be admitted. CIRP cannot be admitted. ये सब हम OC application की बात कर रहे हैं. So cannot be admitted, and the judge will dismiss OC application. He will dismiss OC application. Okay. दूसरा लेसन जो यहां पे सीखने को मिला वो ये था कि the dispute is pending during resolution period. Dispute is pending during a resolution period. Okay, so if the dispute is pending during resolution period, moratorium applies. Moratorium applies. उस केस के अंदर not to admit any application. Moratorium applies. Got it? So उस केस के अंदर कोई भी कोर्ट कोई भी एप्लीकेशन एडमिट नहीं करेगा एसेट्स के खिलाफ. So not to admit any application, चाहे फिर वो आर्बिट्रेशन हो या कोई भी सिविल कोर्ट हो. Okay, not to admit the application. And अगर dispute pending है after resolution, if the dispute is pending after resolution, dispute is pending after resolution. Okay, so इस केस में क्या होगा कि
दैट इज रेजोल्यूशन हो चुका है और फिर भी डिस्प्यूट रनिंग है, सो एक रिकवरी केस होगा, रिकवरी केस विल बी फाइल्ड। Recovery case has to be filed. Okay, so अगर that is you can say resolution हो गया है तो recovery case, तो याद रखना it is something like you can say recovery of money. It is just a recovery of money, और इस केस में जो CIRP एप्लीकेशन होता है that can be filed, पर कभी मतलब एक CIRP का रेजोल्यूशन हो गया है, एक CIRP का रेजोल्यूशन हो गया है, एक कंपनी ने टेक ओवर लिया है, लेकिन अभी भी कॉर्पोरेट डेटर में डिस्प्यूट्स पेंडिंग थे। समझा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे, एक कॉर्पोरेट डेटर था, कॉर्पोरेट डेटर का टेक ओवर किया है, लेट्स सपोज पूजा ने उस कंपनी का टेक ओवर किया है, अब उस कंपनी में उस समय अभी भी डिस्प्यूट्स थे, तो पूजा की कंपनी डेफिनेटली उस डिस्प्यूट्स के अंदर रिकवरी केस करेगी, बराबर, क्योंकि उसने टेक ओवर तो कर लिया है, तो डेफिनेटली समथिंग लाइक दिस। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे। आपने नाम सुना होगा भूषण स्टील, भूषण स्टील का टेक ओवर टाटा स्टील ने किया था, बराबर, तो भूषण स्टील के जितने भी डिस्प्यूट्स थे वो टाटा स्टील कैटर करेगा, उनके लिए टाटा स्टील रिकवरी करेगा, बराबर, क्लियर? अब इस केस में टाटा स्टील को मालूम पड़ा कि माइक्रा स्टील जो एक्चुअली भूषण स्टील का क्रेडिटर था, वो भूषण स्टील के ऊपर वापस से CIRP करना चाहता है। क्या वो CIRP कर सकता है? ऑलरेडी इसने CIRP में ही उसको टेक ओवर किया है, तो क्या दोबारा एक CIRP कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, वेरी गुड। कौन सा लॉ रेफर कर रहे हो? हाँ, 12 मंथ्स के बाद हो सकता है, सेक्शन 11 रेफर कर रहे हो, 12 मंथ्स के बाद हो सकता है। ओके, सो इसका मतलब इफ द डिस्प्यूट इज पेंडिंग आफ्टर रेजोल्यूशन, तो टाटा स्टील वाला डू अ रिकवरी केस, लेकिन अगर कोई क्रेडिटर केस करना चाहे तो रिमेंबर इट इज merely a case of recovery as no further CIRP can be filed for 12 months from date of a resolution plan। अब ये बात समझ में आई कि डिस्प्यूट आपका कब पेंडिंग था और किस नेचर में था पहले तो। ओके, पहले ये बात समझ में आई। जो आपने लिखा था कि डिस्प्यूट इज पेंडिंग आफ्टर रेजोल्यूशन, तो हमने तो पढ़ा था कि एक बार एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग हो गई तो उसमें आपको जो अमाउंट मिला वो मिला तो फाइनल उसके लिए बाद में आप कोई और केस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, वो अमाउंट जो मिला वो फाइनल है। ओके, एग्जैक्टली, वो गया। ओके, वो पॉइंट बराबर है, लेकिन अगर कोई पार्टी उसके बाद भी डिस्प्यूट रेज कर रहा है तो एग्जैक्टली जो हो गया वो हो गया, बात क्लियर है। अगर कोई पार्टी उसके बाद डिस्प्यूट रेज कर रहा है तो क्या वो CIRP रेज करेगा कि रिकवरी केस? एग्जैक्टली, हम वही लिख रहे हैं कि अगर उसको करना भी होगा
तो रिकवरी केस करेगा और हम उसके रिकवरी केस में बोलेंगे कि सीआईआरपी हमारा हो चुका है, उसे जो मिला बाकी खत्म। ओके, समझा? और उसके बाद जब नया कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद नए कंपनी पे आपको केस करना है, तो मैंने आपको ये भी समझाया था 12 महीने रुकना, उसके बाद करना। वही हमने आंसर में लिखा है कि नो फर्दर सीआईआरपी कैन बी फाइल्ड फॉर 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। क्लियर? और एक और एंगल क्लियर कर देता हूं, ये भी काफी बच्चों के दिमाग में रहता ही है, जो मैंने आपसे पूछा भी था। लेट्स सपोज यहां पे एनसीएलटी की बेंच है। ओके, एनसीएलटी जज की बेंच है एंड यहां पर लेट्स सपोज ओके, दिस इज द कोर्ट रूम। ठीक है, अब हुआ ये है कि इस कंपनी सेक्रेटरी ने एनसीएलटी को बोला है दैट वी हैव फाइल्ड सीआईआरपी एप्लीकेशन। We have filed CIRP application. Got it? So he says, Your Honor, we have filed a CIRP application in this case. और ये वाला जो CS है, ये CS NCLT के जज को क्या बोल रहा है? ठीक है, let's see and understand. ये CS NCLT के जज को बोल रहा है कि सर there is an arbitration between us. There is an arbitration between us. Okay, and section 8 of arbitration act के हिसाब से, under section 8 of arbitration act, okay, under section 8 of arbitration act, the matter should be referred to arbitration. The matter should be referred to arbitration. Okay, now आपको ये समझना है, will NCLT allow, ये बताना है। ओके, सो एक सीएस बोल रहा है कि सर देयर इज अ क्लियर कट आर्बिट्रेशन बिटवीन अस। आप ओरिजिनल एग्रीमेंट देख सकते हो जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे बीच में कल को कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो व्हाई शुड वी बी फाइलिंग सीआईआरपी एप्लीकेशन? वी शुड गो फॉर द आर्बिट्रेशन। ओके, क्लियर? समझ में आया? तो अच्छा, हाँ, ये भी क्लियर कर देता हूं। ही हैज फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7। चलो, अंडर सेक्शन 7 ये सीएस ने एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 7, नॉट अंडर सेक्शन 8। ओके, अब इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया था? इस सिचुएशन को टैकल किया था एक केस ने, दैट वाज इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कोटक इंडिया वेंचर्स ऑफशोर फंड्स लिमिटेड। The Kotak India Venture Offshore Funds Limited 2021 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है, और इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन डाला था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वेल, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि इन एनी proceedings which is
pending before NCLT, which is pending before NCLT. So in any proceedings which is pending before NCLT, under section 7 of IBC, is such petition, if such petition is admitted by NCLT, so if such petition is admitted by NCLT, okay, you can say by recording reasons for its satisfaction, by recording reasons for its satisfaction. So by recording reasons for its satisfaction, the application under section 8 of Arbitration Act, the application under section 8 of Arbitration Act, okay, is not maintainable. Is not maintainable. Got it? So they made it clear, they made it very much clear कि अगर किसी केस में जो आपके हाथ में एप्लीकेशन है and that application, that petition is already admitted, वो petition admit हो चुकी है by NCLT, okay, that petition is admitted by NCLT. Just a minute, sorry. The petition is admitted by NCLT, तो क्या, तो उसका असर क्या, ओके, इस पॉइंट का ध्यान रखना. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और सिचुएशन डिस्कस की. सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके बाद बोला कि इन अ सिचुएशन वेयर petition under section 7 of IBC is yet to be admitted, and that was unique, is yet to be admitted, and any such proceedings under section 8 of the Arbitration Act, and any such proceedings under section 8 of Arbitration Act. So such proceedings under section 8 of Arbitration Act is filed, okay, is filed, comma, then NCLT is duty bound to decide upon, then NCLT is duty bound to decide upon, okay, decide upon section 7 of IBC, section 7 of IBC, and record to its satisfaction, and record to its satisfaction of any default or not, okay, and record to its satisfaction of any default or not, okay. So important चीज यहाँ पे उन्होंने highlight की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने वो ये था कि यहां पर द एप्लीकेशन इज येट टू बी एडमिटेड, अभी तक एडमिट नहीं हुई है, तो ये सिचुएशन, एंड दस यू कैन से दस in such case मतलब above case, NCLT must first decide on section 7 of IBC, decide on section 7 of IBC, and then on section 8 of arbitration and conciliation act. Okay, section 8 of arbitration and conciliation act. Now that is unique. मतलब सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है? सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि अगर सेक्शन 7 एप्लीकेशन ऑलरेडी एडमिट हो चुका था, तब एनसीएलटी को सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट वगैरह ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको देख के भी वो क्या कर लेगा, बिकॉज एप्लीकेशन तो एडमिट हो चुका है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन एनसीएलटी के जज के सामने पड़ा है और वो एप्लीकेशन अभी तक एडमिट नहीं हुआ है, वो एप्लीकेशन अभी तक एडमिट नहीं हुआ है, सो जज का सबसे पहला ड्यूटी क्या रहेगा कि सामने अगर कोई पर्सन कॉर्पोरेट डेटा आके बोलता है सर हमारे बीच में आर्बिट्रेशन है, आप ये एप्लीकेशन कैसे एडमिट कर सकते हो, तो जज को सबसे पहले सेक्शन 7 डिसाइड करना होगा कि एप्लीकेशन कंप्लीट है, कहीं कोई डिफॉल्ट साबित हो रहा है कि नहीं, ओके, या फिर इसमें अंदर दैट इज अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर है, अपना वो जो आईपी है वो सब अपॉइंटेड है, ये साबित करना होगा। इस केस में अगर ये साबित हो जाता है तो फिर बाय रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग जज एडमिट कर सकता है। लेकिन अगर इसमें से जज को थोड़ा डाउट जाता है कि 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट भी है कि नहीं, अगर जज को डाउट जाता है कि ये एफसी का क्लेम है लेकिन फिर भी इसमें एडमिट करने जैसा लग नहीं रहा है, तो जज फिर सेक्शन 8 के एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये मैटर आर्बिट्रेशन में भेजा जा सकता है कि सिविल कोर्ट में जाएगा। अगर आर्बिट्रेशन में भेजा जा सकता है तो जज बोलेगा देखो अभी तक 1 करोड़ का डिटरमाइन होना मुश्किल हो रहा है, आप मैटर लेके आर्बिट्रेशन जाओ, क्योंकि आपने आयु की भी कोई रिपोर्ट नहीं दी है, आपने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं दिए, तो पहले रिकवरी केस हो सकता है वो देखो और उसके बाद आप समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट बोल क्या रहा है। तो इस पूरे जजमेंट ने एनसीएलटी में बर्डन बढ़ा दिया है, क्योंकि इस तरह से दोनों एस्पेक्ट को देखने में टाइम काफी जाएगा। समझा वो बोल क्या रहा था और क्या जानने के था? ओके